Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I am going to discuss about medical and surgical management of ulcerative colitis. Before starting video, firstly subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So let's start. Start from its definition. Ulcerative colitis is a chronic idiopathic inflammatory disease of the mucosa and less frequently the submucosa of the colon and rectum. If only the rectum is involved, it may be called ulcerative proctitis. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है कि एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि कॉलन और रेक्टम की जो मिक्योजा एंड सब मिक्योजा लेयर होती है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन के बाद अल्सरेशन फॉर्म होते हैं इन दी कॉलन एंड रेक्टम। So next is medical management under this drug therapy. The first drug therapy is sulfasalazine, second oral salicylate, third one is mesalamine enema, and fourth one is corticosteroid. Next immunosuppressive drugs, and last one is antidiarrheal drugs. Now I elaborate its drug therapy. The first is sulfasalazine. It is used to treat ulcerative colitis and also maintain improvement of ulcerative colitis symptoms. इसमें ये ड्रग है, इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को एंड मेंटेन इम्प्रूवमेंट ऑफ जो सिम्टम्स होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के उसको इम्प्रूव करने के लिए ये ड्रग को यूज़ करते हैं सच एज 5-amino salicylic acid. Second one is oral salicylate are the medication used to treat pain, fever and inflammation. It is one of the most oldest commonly used non-steroid anti-inflammatory drug. इसको पेशेंट को देते हैं पेन को ट्रीट करने के लिए, पेन का लेवल रिड्यूस करने के लिए, फीवर में पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए देते हैं और ये बहुत ही ओल्डेस्ट मीन्स काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम पेशेंट को जो हो रही है इसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और इसकी डोजेज हैं अडल्ट और टीनेजर के लिए 325 और 650 मिलीग्राम एवरी 4 hours एज नीडेड. For children under 6 years and older, 325 mg every 4 hours as needed. Third one is mesalamine enema. It is used to rectal suspension enema is indicated for treatment of active mild to moderate distal ulcerative colitis, proctostigmatitis and proctitis में ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं. Next fourth one is corticosteroid. Corticosteroids means non-inflammatory drug therapy. Under this prednisolone, prednisolone and hydrocortisone ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं to reduce the inflammatory process. Next fifth one is immunosuppressive drugs. पेशेंट को immunosuppressive drugs देंगे. Sixth one is एंटीडायरल ड्रग्स. पेशेंट को लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है अल्सरेटिव कोलाइटिस में और इसमें हम पेशेंट को एंटीडायरल ड्रग्स देंगे ताकि पेशेंट का डिहाइड्रेशन स्टेटस हुआ है जो उसको रिड्यूस कर सकें, पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन हो जाए. नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट. अंडर दिस सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूड द फर्स्ट इज नॉन क्यूरेटिव अप्रोचेज, सेकेंड वन इज रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर. अंडर नॉन क्यूरेटिव अप्रोचेज फर्स्ट वन इज टेम्पररी लूप क्लोस्टमी, second subtotal colectomy, ileostomy and Hausmann. Third one is colectomy with ileorectal anastomosis and second is reconstructive procedure. Under this total protolectomy with continent ileostomy. Third one is total colectomy with ileoreservoir and last is ultimate surgical goal to remove the entire colon and colon to cure ulcerative colitis. Now I explain surgical procedure. First is temporary loop colostomy. What is temporary loop colostomy? It is a hole is cut in the side of colon and stitched to corresponding hole in the abdominal wall. The loop is opened up and stitched to your skin to form an opening called stoma.
The stoma has two openings that are close together. Next surgical procedure is subtotal colostomy, that is removal part of the colon and may also be called subtotal colostomy. Hemicolectomy involves removing the right and left portion of the colon. Protocolectomy involves removing both the colon and rectum, that is the surgical procedure. Next surgical procedure is colostomy with ileorectal anastomosis. Under this, after removing the both colon and rectum, the surgeon may use a portion of small intestine to create a pouch that is attached to anus. This allows to expel waste normally through may have several watering bowel movement each day. Next surgical procedure under reconstructive procedure, that is total proctocolostomy, that is surgical procedure removal of colon, rectum and anus. Surgeon will perform it while under general anesthesia. Next surgical procedure is total proctocolostomy with continent ileostomy, that is different type of ileostomy. With continent ileostomy, a pouch that collects waste is made from part of small intestine. This pouch stays inside body and it connects to stoma through a wall that surgeon creates. The ultimate surgical goal to remove the entire colon and rectum to cure ulcerative colitis. सर्जिकल गोल क्या है कि रिमूव कर देते हैं इसमें कॉलन एंड रेक्टम को टू क्योर मीन्स टू इम्प्रूव अल्सरेटिव कोलाइटिस. जो अल्सरेशन की प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए रिमूव करते हैं एंटायर कॉलन एंड रेक्टम को. So guys, it's all about my topic. Today I discussed about medical management and surgical management of ulcerative colitis. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.